माई वे और द हाईवे वाले सियासत जो चल रहा है उसको दफन करना है. टू हेल विद द इकोनॉमी, टू हेल विद द टेररिज्म इशू, टू हेल विद क्लाइमेट चेंज. हमने बस अपना अना की वजह से इंतकाम लेना है. द ओनली पार्टी दैट इज एंटी द फ्यूडलिज्म स्टेटस को इज द पीपल्स पार्टी. जब गरीब अवाम को हक मिला है तो पीपल्स पार्टी के थ्रू मिला है. जब मजदूर को हक मिला है तो पीपल्स पार्टी के थ्रू मिला है. जब किसान को हक मिला है तो पीपल्स पार्टी के थ्रू मिला है. चाहे वो 18वीं तरमीम हो, चाहे वो NFC अवार्ड हो, चाहे वो सूबे के हुकूक हो, चाहे वो द ओनली सोशल सेफ्टी नेट इन दिस कंट्री, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हैं. आप चाहते हो कि जो आपका अपना इशू है, चाहे वो भारिया का हो, चाहे वो DHA का हो, या जो भी आपका अपना इशू, कि आप इस इशू पे भी हम यही लाइनें, वरना आप तो अवाम की फिक्र ही नहीं करती हैं. हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अ वेरी 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 स्पेशल एपिसोड ऑफ द पाकिस्तान एक्सपीरियंस. नयाब गौहर जान यहाँ बैठी हुई हैं जिन्होंने सालों कोशिश की कि ये पॉडकास्ट हो जाए. फाइनली ये हो चुका है. मैं इस्लामाबाद आ चुका हूँ. द चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, द फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर इज़ हियर विद अस. चाह तो रहे फाइनेंस मिनिस्टर ना हो. कैसे हैं सर आप? मिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी. Thank you for coming to Islamabad to take our interview. नहीं, थैंक यू सो मच. आई एम श्योर इट्स बिन अ टायरिंग डे. थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम आउट फॉर अस. सिंस मैंने फाइनेंस मिनिस्टर वाला फंबल कर ही दिया, आपने अभी रिसेंटली कहा था कि आपके फाइनेंस मिनिस्टर कोई भी होंगे एक्सेप्ट इसहाक डार, लेकिन जब आपकी हुकूमत थी तब तो वही थे. कौन सा? मिस्टर इसहाक डार वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द PDM गवर्नमेंट. जिंदगी से सबक हासिल करते हैं, तो अब हमने ये सबक हासिल किया है. बट ये थोड़ा डिसइनजेन्युअस नहीं लग रहा कि 18 महीने में सारे सबक हासिल किए? जब PDM गवर्नमेंट थी तो शहबाज शरीफ वाज ग्रेट, शहबाज अंकल वाज ग्रेट, नवाज अंकल वाज ग्रेट. नाउ दे आर द वर्स्ट पीपल इन द वर्ल्ड ऑन द कैंपेन ट्रेल. वर्स्ट पीपल इन द वर्ल्ड वुड बी अ स्ट्रेच, बट आई थिंक पूरा पाकिस्तान का ये उम्मीद था, कोalition हुकूमत का, हमारा ये नीयत था, अगर हमने इनके साथ चले थे तो इसलिए नहीं कि इनके शक्ल पसंद आ रहे थे हमें, हम साथ चले एक इसलिए हमें समझ में ये आ रहा था कि पाकिस्तान में क्राइसिस हैं, एक इकोनॉमिक बहरान पैदा हो चुका है, एक जमहूरी और आइनी बहरान पैदा हो चुका है, ख़ारजा सतह पे हम आइसोलेट हो चुके हैं. तो इस नीयत के साथ इकट्ठे हुए कि इन तमाम बहरानों को हम मुकाबला करें, कोalition में साथ मिल के सब अपने अपने मोर्चे संभालें, और एक उस नीयत के साथ, जिस नीयत से हम इकट्ठा हुए, उसी नीयत के साथ हम हुकूमत करते थे. मगर आहिस्ता आहिस्ता हम PDM के बजाय PNA की तरह लगना शुरू हो गए, IGI के तरह लगना शुरू हो गए. ऑब्वियसली मैं IGI का और PNA का तो सियासत का तनकीद करूँगा, जो मियाँ साहब का इनिशियल या प्रीवियस मियाँ साहब 3.0, if this is 4.0 that we're experiencing right now, जहाँ वोट की इज़्ज़त के देने की बात थी, जहाँ एक पूरा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तसलसल की बात थी, तो उसका साथ हमने दिया. आज आप मुझे बताएं, मैं शायद बायस्ड हूँ किसी न किसी वजह से, आप एक अनबायस्ड एनालिसिस करें मियाँ साहब के सियासत का, मुस्लिम लीग नून के सियासत का इस वक्त, और क्या वो आपको वही मियाँ साहब नज़र आता है जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मियाँ साहब था, या ये वही मियाँ साहब नहीं है जो अमीर उल मोमिनीन बनना चाह रहा था, जो IGI को लीड कर रहा था? आई थिंक अगर आप एक इम्पार्शल एनालिसिस करें तो अनफॉर्चुनेटली ये वही पुरानी सियासत को आगे लेके, लग तो ऐसे रहा है, आगे लेके यही पुरानी सियासत को चलाना चाह रहे हैं. उससे मेरा तौबा है, मैं उस सियासत में किसी के साथ नहीं दे सकता. अगर किसी ने नया सियासत करना है, नफ़रत और तकसीम की सियासत को दफन करना है, हकीकी मानों में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को एक असल सॉर्ट ऑफ
اس پہ عمل درآمد کرنا ہے, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن قائم کرنا ہے, تو ان چیزوں میں کسی کے ساتھ دے سکتا ہوں, خود کرنا چاہوں گا, مگر اگر وہی پرانی سیاست ہونا ہے تو اس سے میرا توبہ. آپ نے IGI کا ذکر کیا. نواز شریف واز دا فیس آف IGI. ہم کہتے ہیں چلیں چارٹر ڈیموکریسی ایک ریسیٹ تھا, وہ بدل گئے, نئے نواز شریف آ گئے, بٹ PDM کے فیس تو شہباز شریف تھے. شہباز شریف ڈاکٹرن از ناٹ اینٹی اسٹیبلشمنٹ. وہ But that, you see, this is, I don't think everything is just anti or pro establishment. اور آپ میاں صاحب کی اپنی سیاست, اپنی بیانیاں, اپنا پارٹی, وہ قائد ہے اپنا پارٹی کا. وہ جب پسند کرے تو نہیں کہہ سکتے کہ اب شہباز شریف کو جماعت ہے, جب پسند ہو تو میری جماعت بن جاتا ہے. That's a bit disingenuous. You can't separate the one from the other. And جہاں تک PDM کی حکومت ہے, اس میں ایک ڈسنجینیون کوشش کیا جا رہا ہے میاں صاحب کی طرف سے. to pretend it never happened, کہ ایک تو 2017 تھا, اور 2 ہم ادھر آئے, اور 2 کہ وہ تو ایک آف شوٹ تھا, اس میں تو کوئی اس کا بات ہی نہیں مانتے تھے ہم. جب اصل میں نے خود اس حکومت کا حصہ ہوتے ہوئے دیکھا کہ میاں صاحب نے اپنا اتھارٹی اپنے بھائی پہ ایکسرٹ کیا, اس کا وزیر خزانہ جہاں سے یہ کنورسیشن شروع ہوا, اس کو چینج کروایا, اس اپنے بھائی کے ہاتھ باندھے, جس کا نقصان پاکستان کی معیشت کا ہوا. وہ ہمارا نیت جس کا یہ ہونا چاہیے تھا کہ معاشی بحران سے نکلے, جمہوری اور آئینی بحران سے نکلے, خارجہ سطح پہ سب کچھ صحیح کرے, ان کا تو وہ کام کرنے کے بجائے ان کا صرف ایک کام تھا کہ میاں صاحب کو 4تھی بار وزیر اعظم بنانا ہے. اب اس کا کاسٹ ہے, اور اس کاسٹ کا میرے خیال میں پاکستان کے عوام کو اٹھانا پڑ رہا ہے. That's not fair. ہم اس اسٹیبلشمنٹ اینٹی پرو کو سائڈ پہ بھی اگر رکھیں تو اٹ آلموسٹ سیمز لائک کہ WWE میں جو ہوتا ہے, آپ ریسلنگ دیکھتے ہیں, وہ بیک سٹیج جا کے گلے مل رہے ہوتے ہیں. تو 18 مہینے PDM was together. Right now you are disowning everything wrong done by the PDM government. تو خان صاحب والی بات ہے نا کہ جو برا ہوتا تھا وہ آرمی چیف کرتا تھا, جو اچھا ہوتا تھا وہ عمران خان کرتے تھے. تو جو برا ہوا وہ PMLN نے کیا. Why you not owning as the coalition partner? I own every single decision that I was a part of, that I was consulted for. But میں کیا کروں جو میں نے کام کیے وہ PDM کے حکومت کے اچھے کام ہیں, جو وزارت میں تھے, جو انہوں نے کام کیے, آپ امپارشلی اس کو اسیس کرے کہ اس کا امپیکٹ کیا تھا. جہاں تک رسپانسبلٹی کی بات ہے, یہ آواز ان کی طرف سے پہلے اٹھا, پیپلز پارٹی کی طرف. ویسے تو پیپلز پارٹی کو تو درمیان میں یہ کہنا چاہیے تھا, مگر یہ آواز تو ان کی طرف سے پہلے اٹھا کہ ہم اپنے وزارتیں کی ذمہ دار ہیں اور وہ اپنے وزارتیں کی ذمہ دار ہیں. وہ اپنی جگہ, جہاں میں جس چیز کا میں تنقید کر رہا ہوں, اس میں ایک جماعت شامل تھا, اس میں میاں صاحب بھی شامل تھا, اس میں نہ پیپلز پارٹی, نہ مولانا فضل الرحمان, نہ باپ, نہ JWP سے. باپ پارٹی یا باپ پارٹی, اچھا پتہ نہیں, باپ بھی شاید, کہ وہ جو یہ فیصلہ کہ جتنا مشکل کے بعد پورا حکومت نے, سارے اداروں نے مل کے محنت کر کے پاکستان کو IMF کا پیکیج حاصل کر لیا, جبکہ خان صاحب نے اپنے دور میں اپنے معاہدہ سے نکلا. رائٹ, وہی بات کہ سیاست کو قربان کر کے ریاست بچا رہے تھے. جو the part that they don't tell you is کہ after we had sealed this deal, انہوں نے بھی وہی کام کیا جو خان صاحب نے کیا. اگر وہ ہم سے کنسنسس کے ساتھ کرتے تو میں اس کا آپ کے سامنے ذمہ دار بھی ہوتا, مگر میں نے اس بات کا ڈٹ کے مخالفت کی ہر موقع پہ ہماری حکومت کے وقت, کہ آپ کیسے خود یہ فیصلے کر سکتے ہو کہ 3 مہینے کے لیے ہم اپنا ابھی اتنا مشکل سے حاصل کیا گیا معاہدہ پہ ہم عمل درآمد نہیں کریں گے. ان کا سوچ تھا یہ کہ 3 مہینے پہ عمل درآمد نہیں ہوگا. وہ 3 مہینے that ended up being the rest of our government until really the tail end. Now the cost of that, the burden of that, شاید شہباز شریف کو نہیں اٹھانا پڑ رہا ہے, شاید میاں صاحب کو نہیں اٹھانا پڑے گا. یہ ان کی تو آخری اننگس ہیں. اس کا بوجھ, وہ قرض, وہ قیمت مجھے اور آپ کے اور پاکستان کی 65% پاپولیشن جو نوجوان ہیں ان کو وہ بوجھ اٹھانا پڑے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ڈس انجینیوس ہے جب میاں صاحب کہتے ہیں کہ 2017 میں یہ تھا اور آج یہ ہے. آج اگر ہم یہاں کھڑے ہیں وہ اس لیے کہ میاں صاحب نے
PDM की हुकूमत में फाइनेंस मिनिस्टर को उस अहम वक्त में तब्दील कर दिया और ये कोशिश की कि PDM की हुकूमत को रिमोट कंट्रोल से चलाया जाए. डोंट यू फील कि समटाइम्स PPP में जो आप बयान देते हैं वो इन प्रैक्टिस या असेंबली में नहीं होता? अगर आप कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट है 90 डेज और हमारी पोजीशन होना चाहिए, बट व्हेन इट कम्स टू लेजिस्लेशन PPP lets it pass. When it comes to the 90 days का question, it wasn't simply a question about 90 days. Absolutely 90 days में होना चाहिए. मगर उस वक्त सवाल क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो चीफ जस्टिस था वो एक अक़लियत का फैसला को अक्सरियत की वो शक्ल देने जा रहा था. तो उस लड़ाई में हम पार्लियामेंट के साथ खड़े थे और सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियत के साथ खड़े थे. मगर तब भी मैंने अपने हैसियत में, अपनी पार्टी की कैपेसिटी में ये पूरी कोशिश किया कि सियासी तरीके से डायलॉग के थ्रू हम ये जमहूरी और आइनी बहरान को एड्रेस करें. और मैंने बड़ा मुश्किल से अपने इत्तेहादियों को इस पॉइंट में पे लेकर आया कि हमें इसे डायलॉग करना चाहिए. PTI का जो PDM का एक डायलॉग हुआ वो इसलिए कि हमने चाहा कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को इस तरीके से एड्रेस किया जाए कि तमाम प्रोविंशियल असेंबली और जनरल इलेक्शंस का, वो जनरल इलेक्शन का डेट का जो अब मसला हो गया है वो भी नहीं होता. हम सब तय करके वो इलेक्शन लड़ते. नाकाम हुआ अपना कोशिश में, मगर कोशिश मेरा वो था ऑफ द रिकॉर्ड, मतलब पब्लिक में ये ज़ाहिर नहीं हुआ, मगर उस वक्त में साथ साथ शहबाज शरीफ साहब के पास किए कि इस रास्ता अपनाने के बजाय आप कॉल हिज ब्लफ, इलेक्शंस करवा दें. खान साहब उन दिनों में बकेट अपना सर पे पहने हुए बगैर घर से बाहर नहीं निकलता. और मेरा कहना ये था कि आप मियाँ साहब को वापस पाकिस्तान में बुलाए इलेक्शन से 1-2 हफ्ते पहले. जैसे इसका इस्तकबाल अभी हुआ तब उसे शायद उससे भी बड़ा इस्तकबाल हो जाता और हम सब अपने अपने इलेक्शंस लड़के ये चीज़ निकाल दें. इसको वो भी नहीं माना गया. हमारा कोशिश जो डायलॉग से हल निकालना वो भी नहीं हो सका. और फिर उन जीनियसेस ने May 9 पे एक नायब की गिरफ्तारी की रद्द-ए-अमल में इदारों पे हमले किए. सो टू समराइज, आपकी पोजीशन ये है, आई एम श्योर जो केयर टेकर गवर्नमेंट अब 1.5 साल चल चुकी है पंजाब में, वो इनडिफेंसिबल है कि जब शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी नेगोशिएशंस में आए थे उसमें डिसाइड हो गया था कि अक्टूबर-नवंबर में इलेक्शंस होंगे. एंड apparently खान साहब का कॉन्फिडेंस था and he had given them permission to negotiate, but when that agreement was reached he reneged on that and he said नहीं, अब भी elections नहीं होंगे. Is that your position? I don't know the details of the language that was used. ये जो आप कह रहे हैं कि अपने elections नहीं होंगे, मगर बिल्कुल जो consensus हमारा parliamentary जो कमेटी था उस consensus पे पहुँचे, खान साहब ने agree नहीं किया. मैंने तो I'm revealing to you now, मैंने तो इन दिनों में नवीद कमर को शाह महमूद के पास भेजा कि इसको समझाएं कि पीपल्स पार्टी इज़ अ डेमोक्रेटिक पार्टी. वी आर द ओनली वंस हु रियली वांट इलेक्शंस, बोथ नाउ छोटे इलेक्शंस और इलेक्शंस टाइम पे हो. सियासी इख्तलाफ का सियासी हल निकाला जाए, इस आयानी बहरान का सियासी हल निकले. वो लोग नहीं माने, उनकी मर्जी. If Imran Khan's position is कि the stumbling block was बंदियाल की कोर्ट में इलेक्शन नहीं हो सकता, that's what PMLN wanted. Are you privy while Bandial is the chief justice? There's a whole meta argument about, okay, fine, fair enough, yes. There's a but was that a part of the discussion? The point is that shouldn't, as in, too bad. Okay, kaun sa individual, I mean, that was our criticism of Mr. Khan, right? That was our criticism. तो हम उस criticism में तो खुद वो चीज़ ना करें. This was also opportunity जो हम politically एक चीज़ को हल कर सकते हैं. किसी भी populist opposition को politically भी काउंटर किया जा सकता है. मेरे ख्याल में ज़्यादातर गैर सियासी और तरीक़ेकार से काउंटर किया. हमारे हुकूमत में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेड हुकूमत में, हमने लॉन्ग मार्चेस भी देखे, हमने आज़ाद जो मीडिया हैं, आज़ाद अदलिया भी, और तमाम, आप एक का नाम ले रहे हैं तो मियाँ साहब भी, ये खान साहब भी सियासत कर रहा था इन दिनों में. तो हमने सियासत इस्तेमाल करके सारे क्राइसिस को मैनेज किया. डायलॉग के थ्रू सारे
کرائسس سے مقابلہ کیا. اور میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے تمام مسائل جو ہے ہم سیاسی طور پہ ان کا حل نکالیں تو حل نکل سکتا ہے, غیر سیاسی طریقے سے حل نہیں نکلے گا. سو آن پیپر واٹ یو آر سیئنگ آئی ایگری وتھ, بٹ جب یہ ڈسکشنز ہو رہے ہوتے ہیں فگریٹیولی ان دا روم ویئر اٹ ہیپنس, یہ ڈسکشنز جو غیر سیاسی پوزیشنز ہیں, آئی ایم شیور دیٹس اے پارٹ آف دا ڈسکشنز, رائٹ, کہ اگر آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس ڈسکس کر رہے تھے, واز اٹ انڈر دا completely, that's exactly a good example of the point. if I may, was a part of the discussion کہ اگر جنرل فیض اپوائنٹ ہو گئے تو اٹ مائٹ بی ناٹ بی گریٹ فار PMLN اینڈ PPP, اس لیے ہمیں عمران خان کو ہٹانا ہے, اور از دیٹ not for PMLN and PPP and not even specifically that. خان صاحب کا پورا جو ماڈل تھا اس ملک کا, اس نے تمام ادارے, اس نے اسٹیبلشمنٹ کو پرچ کر کے اپنا ٹائیگر فورس ادھر بٹھانا تھا, اس نے جوڈیشری کو پرچ کر کے اپنا ٹائیگر فورس ادھر بٹھانا تھا. یہ کوئی 3 سال کا پلان نہیں تھا, یہ تو 10 سال کے آگے کی پلان تھا. وہ ایک الگ ایشو. ڈسپائٹ فیسنگ دیٹ سارٹ آف چیلنج اینڈ دیٹ سارٹ آف تھریٹ, یو فالو دی انٹائر پالیٹکس واز ڈیورنگ دی اپوزیشن. میرا ہی زور ہمیشہ یہی تھا کہ جو بھی ہو جائے میں غیر جمہوری ہتھیار یا طریقہ کار نہیں اپناؤں گا, یہاں تک کہ میں دھرنا نہیں دوں گا تاکہ میرا دھرنا کا کوئی تیسری فورس فائدہ نہ اٹھائے. میں نے لانگ مارچ کیا تو لٹرلی ایز اے پروٹیسٹ یو کم اینڈ یو گو. یہی وجہ تھا کہ میرا زور یہ تھا کہ میں اس کو, میں جانتا ہوں کہ میں گیٹ نمبر 4 سے بھی نکال سکتا ہوں, میں جانتا ہوں کہ کورٹ روم نمبر 1 سے بھی میں نکال سکتا تھا, مگر میں نے یہ چاہا کہ نہیں, ہم جمہوری طریقے سے عدم اعتماد لے کر آ کے پارلیمان کے تھرو اگر ہٹانا ہے تو, اور یو گیو اٹ دا ریزن وائی, اگر ہٹانا ہے تو عدم اعتماد کر کے ہم ہٹائیں گے. وہ کام ہم نے کر لیا. اس کے بعد ایک گولڈن اپرچونٹی پیش آیا جو کہ پاکستان کی تاریخ میں, مگر all countries in their history there's very few opportunities, historic opportunities that one must seize on. One such opportunity presented itself when the Chief of Army Staff came on national television and said کہ پاکستان کا اسٹیبلشمنٹ ماضی میں سیاست میں, I forget the exact language, میں مداخل کرتا تھا, وہ رہتا, اب ہم نہیں کریں گے. وہ ایک موقع تھا نہ صرف حکومت کے سیاستدانوں کے لیے, اپوزیشن کے سیاستدانوں کے لیے, کہ ہم اس ایک سوچ کو حقیقت میں تبدیل کر دیتے اور اس پہ ہمارا سو کالڈ بیانہ پہ ہم عمل درآمد کر دیتے. I completely agree that the bigger role played in sort of sabotaging that opportunity is by our opposition, by the fact that they never did political or democratic opposition. They left Parliament rather than keeping the leader of the opposition. That constitutional crisis of the provinces only arose because they left their own provincial governments. He didn't for one day did opposition to Bilawal Bhutto or to Shehbaz Sharif. He did it individuals کے خلاف. وہ اس نے ابل دخل کرنا تھا اپوائنٹمنٹس کے سلسلے میں. اس نے اپنا سیاست اس طریقے سے کیا, اور پھر اس نے این میں جا کے جب May 9 پہ یہ in a response to a NAB کا گرفتاری اداروں پہ حملے کیے, we were lucky that there wasn't a coup. In fact, even that Pakistan has been governed for more than half of its history by military dictatorship. We're very lucky that that didn't happen. And I mentioned in Parliament at the time کہ ایک ان کا سیاسی جماعت نے تو, ان کا قائد نے اپنا سیاسی جماعت کو ایک بند گلی میں تو دکھیل دیا ہے. ایسے نہ ہو کہ ہمارا پورا نظام کو ایک بند گلی میں دکھیلا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ہمارا جو چیلنج ہے, جو بھی حکومت بناتا ہے فیبرری 8 کے بعد, کہ ہم پہلے سیاست کو سیاست کے دائرے میں لے کر آئے. سیاستدان ایک دوسرے کا عزت کرنا شروع کر دے. کوڈ آف کنڈکٹ ایٹ لیسٹ, منیمم رولز آف بزنس ہم طے کریں. اگر ہم سیاست کو سیاست کے دائرے میں لے کر آئیں گے, ایک دوسرے کی عزت کرنا شروع کر دیں گے, تو ہمارا دوسرا جو ایم ہے کہ باقی تمام ادارے اپنے دائرے میں رہ کے کام کرے, کہ دوسرے بھی ہمارا عزت کرے, تو وہ صرف تب ہوگا
जब when we get our house in order. I agree with you. I think इमरान खान की एक क्लिप भी है कि कू लगा दे मुझे क्या, एंड देन प्रोविंशियल असेंबली जो रेजोल्यूशन है उसमें भी उन्होंने बोला कि जनरल बाजवा ने मुझे बोला था, एंड वन नीड्स टू क्वेश्चन के व्हाई वाज जनरल बाजवा टेलिंग यू टू डिसॉल्व असेंबलीज. बट अगर why was he listening to somebody he claimed was his, what did he name that he gave, anyway whatever it was, आर्च नेमेसिस. तो अगर हम आपके मंशूर से इसको लिंक करें, मंशूर में बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत अच्छी बातें हैं उसमें कि हम लोग ISI और इंटेलिजेंस एजेंसीज भी हैं उनको भी रेगुलेट करेंगे. यू नो वी विल, जो एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट है, वी विल डीकॉर्पोरेटाइज द नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम. हम चाहते हैं nothing happens overnight, that this is all a transition, and in order to do that I've just stated कि step wise क्या तरीक़ेकार. आई एग्री कि ओवरनाइट नहीं होगा. स्टेप 1 इज़ कि सियासतदान जो है वो एक दूसरे का इज़्ज़त करना शुरू करते, हम अपना हाउस इन ऑर्डर करते. ये तो आप फिर जो बातें कर रहे हैं हमारा बहुत दूर की, बट सर उस तरफ कोई कदम तो बढ़ाएं. हम मंशूर में ये पढ़ते हैं PDM हुकूमत आती है, वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू लेजिस्लेशन इसके सारी गवर्नमेंट अपॉइंट्मेंट्स पे ISI की सुपरविजन होगी. नहीं था वो, शहबाज शरीफ का नोटिफिकेशन था. But why did PPP not oppose that? एक और example of a decision taken and implemented without the consultation of at least this ally. I don't know about other allies. I mean, opposition to that 18 months later on a podcast means nothing. आपने उस वक्त क्यों नहीं किया? Opposition तो मेरे इख्तियार नहीं थे, वो फॉरेन ऑफिस का पावर नहीं था, ना ही वो कोई लेजिस्लेशन था जो मैं लेजिस्लेशन के थ्रू ख़त्म करूं. वो एक PM का जहाँ तक मुझे याद है नोटिफिकेशन के एग्जीक्यूटिव डोमेन का पावर है. और आई मीन आउट ऑफ ऑल द इश्यूज दैट शुड that one is facing, I don't think necessarily that is the topmost on our agenda, but फिर भी as I was never consulted, I don't know इसकी ये क्यों ज़रूरी था. और मेरे जो जिस नज़र से मैं देखता हूँ, मैं समझता हूँ कि हमें इनकरेज करना चाहिए लोगों को कि वो सिविल सर्विस में आए. वैसे इट्स थैंकलेस प्रोफेशन, राइट? इट्स नॉट लाइक आप अगर सही काम करें तो यू गेट अ स्टार, यू स्टिल माइट हैव टू गो टू प्रिजन. गलत काम करें तो वाई टेक द रिस्क. आई मीन इट्स अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट जॉब. तो हम तो चाहेंगे कि तमाम सिविल सर्विस में हम अपील करें पाकिस्तान के अवाम इसमें आ जाए. अगर इस किस्म के हम शराइत रखेंगे हर अपॉइंटमेंट के लिए, हर रिपोर्ट के लिए, तो उसका असर तो हमारा अगर रोड मैप मैं चाहूँ, कुछ मुझे स्टेटमेंट बहुत अच्छी लगी थी, डीकॉर्पोरेटाइज द नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम. What does that look like? Look, that it looks like a long and arduous journey बताएं इसके that road we map. have been fighting now for 3 generations. It starts with Parliament taking back its space that we saw. It's not like I'm asking you to imagine something that we haven't done before. The political parties, after Musharraf's dictatorship, through the Charter of Democracy, took back their space, took back space of Parliament through just using the forum and our physical presence that unfortunately our predecessors didn't follow, or through our constitutional amendments addressing the inequalities within our system. यही तरीका है कि आप अपना space वापस लें, and उस तरीके से democracy evolves over time. Unfortunately, what has happened is मियाँ साहब के दौर में, खान साहब के दौर में, जो अभी मुझे जिस पे मैं sort of campaign भी कर रहा हूँ, कि these lessons that we've learned institutionally, political parties have learned as a result of our history, we've decided that we're not going to learn from these lessons and we're going to repeat the same mistakes. इस बुनियाद पे मैं अपना campaign कर रहा हूँ कि प्लीज़ we're in 2024, अब तो टाइम आ गया है कि ये पुरानी सियासत को हम दफन करें और एक मुस्बत तरीके से आगे बढ़े. The challenges that we are facing are such. You've sort of picked on the democratic and sort of crisis. There is that's crisis as well. Yeah. But there's an economic crisis. The terrorism issue is back in a way that it never should have been. We've got a climate crisis that actually is far more severe than the people of Pakistan even
realize a country facing such a multitude of crises cannot afford this hyper-partisan, hyper-polarized. Politics is not even politics anymore. It's literally politics को ज़ाती दुश्मनी तक लेके गए हैं. जो मेरे सामने जो तरीक़ेकार हैं कि हम how do we turn the page, वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा जो ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन की कमीशन का था, हम ट्रूथ और रिकन्सिलिएशन कमीशन बना के जो मैंने इंतकाम की सियासत और ये बाकी जो वादे मैंने किए हैं वो फैसला करेगा कि कौन सियासी कैदी है, कौन सियासी कैदी नहीं है. ना सिर्फ अब ताकि मैं चाहता हूँ कि अपने तौर में कोई सियासी कारकुन कैदी ना रही, मगर तारीख़ी तौर पे हम अपने सबक सीखे. और इस दफ़ा जब हम अपना सबक सीखे, हम सब आपस में ये कंसेंसस बनाएं कि इसी तरीके से हम अपना मुल्क को चलाएंगे, इस दायरा में रह के हम अपना सियासत करेंगे. और वही तरीका है कि हम पाकिस्तान को इन तमाम मसाइल से. बट इज़न्ट देयर अ कॉन्ट्रडिक्शन कि अगर आपकी कैंपेन ट्रेल पे स्पीचेस हैं कि PMLN ने ये सब किया, हमने सीख लिया है, ये गलतियाँ की, और फिर अब हमने कौमी मफाद में साथ बैठ कर ही करना है. Once the new assembly is formed. I just wish that someone would. It's not about what the assembly is formed. All I'm saying is कि आपने. I'm not saying you have to become a coalition. Will we never see a PMLN PPP coalition ever again? I'm not even suggesting, जो मैं कह रहा हूँ कि नफरत सियासत को दफन करना है, इसका ये नहीं मतलब कि हमने सब मिलके कोalition बनाना है. I'm just saying कि आपने my way or the highway वाले सियासत जो चल रहा है उसको दफन करना है. ये सियासत नहीं रहा, ये ज़ाती इंतकाम ही चल रहा है, ज़ाती दुश्मनी चल रहा है. Back to hell with the economy, to hell with the terrorism issue, to hell with climate change. हमने बस अपना अना की वजह से इंतकाम लेना है, ज़ोर ज़बरदस्ती अपनी मर्जी करना है. वो तरीके से तो मुल्क नहीं चलता. हमने पाकिस्तान के अवाम ये चाहते हैं कि जो तारीख़ी मुआशी बहरान है, जो तारीख़ी महंगाई, तारीख़ी गुर्बत और तारीख़ी बेरोज़गारी है, इससे हमें निकाला जाए. इसके लिए मैंने अपना अवामी मुआशी मुआहिदा तय किया, जिसमें 10 निकाती एजेंडा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, जिसमें मैं ज़्यादा टाइम पे देना चाहूँगा. इस पे अगर हम आ जाएं स्पेसिफिकली, ज़बरदस्त चीज़ें बहुत. मैंने 70 पेज वाला भी पढ़ा. आपने किसी को कहा था कि जब आप 70 पेज वाला पढ़ेंगे उसमें डिटेल्स होंगी, बट इतनी डिटेल्स तो नहीं है. अगर हम if we do talk specifically about 300 electricity units, उसमें आपने कहा है कि वो सोलर उससे. So there's two different things. This is our अवामी मुआशी मुआहिदा, जो कि ना सिर्फ वो 10 पॉइंट्स है, मगर 10 पॉइंट्स का फंडिंग भी है. इसको हम कैसे करेंगे और क्यों करना चाह रहे हैं वो भी एक्सप्लेनेशन है. ये हमारा डिटेल मंशूर है जिसके आपने इंस्टीट्यूशनल और डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की बात की. So the question remains the same, right? The question remains, where is the money coming from? That's 64. So you haven't read this, nor have you read that. Because the money, where the money is coming from, is in both of them. No, it's not. It is. If you thought आपने कहा हम डबल करेंगे पब्लिक इन्वेस्टमेंट. but my money, आपने कहा सोलर पैनल्स लगाएंगे for 300 units. Where is that money coming from? पकड़ा गया. How will we do this? ना सिर्फ इसमें, मेरा हर तकरीर में, मेरा हर इंटरव्यू, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि इसी पे हम ना के दूसरी चीज़ें इसी पे बात करूँ कि how are you going to do this. मैंने वादा किया है कि जो 17 मिनिस्ट्रीज़ है जो कि वफाक में आज तक चल रही हैं, इनको 2015 में डिवॉल्व होना चाहिए था, आज तक नहीं हुए. और सालाना एवरी ईयर ये 300 अरब से ज़्यादा ख़र्चा इन वजारतें पे होते हैं. इन वजारतें को हम बंद करेंगे. जो सालाना हमारा अशराफिया को सब्सिडीज़ दिए जाते हैं, 1500 अरब सालाना अशराफिया को सब्सिडीज़ दिए जाते हैं. वो तमाम सब्सिडीज़ को मैं बंद करूँगा. जो हमारा SEOs है जिसके अपने हैसियत में अपने मसाइल हैं और फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनको हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू फाइल करना चाहते हैं, और on and on. But the point is, my key message is that we're going to do this, we're going to cut this and spend that money that we save directly on the people of Pakistan.
be it through Benazir income support program to hai hi, but be it through our Mazdoor card, be it through our Kisan card. If I can give fertilizer companies billions of rupees in subsidies every year from the government of Pakistan, but every year the people of Pakistan will complain about the price and availability of fertilizer, so something is wrong, right? So Kisan card ke through, I'm going to, instead of giving to the companies, directly target small farmers and give them the support that they need. Youth card ke through ہمارا اپنا youth کے لیے proposal ہے. جہاں تک solar energy کی 300 یونٹ کی بات ہے, یہ میرا اوور آل آرگیومنٹ کا ایک حصہ ہے. میرا اوور آل آرگیومنٹ یہ ہے کہ ایک طرف تو جو آپ کا اکنامک کرائسس ایٹسیٹرا ہے, دوسری طرف ایک ایگزسٹینشیل کرائسس ہے پاکستان کو, دیٹ ہٹ ہوم فار می ڈیورنگ دا لاسٹ فلڈس, دیٹ آئی ڈسکورڈ کہ یو اینی وے یوزلی ویسے ہی کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے, نارتھ پول ساؤتھ پول, اوہو آئس برگس تو پگھل جائیں گے, واٹ ول ہیپن ٹو دا پینگوئنز اینڈ ٹو دا پولر بیئرز, اینڈ ہاں کچھ ہوگا, بٹ لائک وین وہ تو ہمارے لیے جو یہ پچھلے سیلاب تھا وہ قیامت سے پہلے ایک قیامت تھا. جتنا تباہی, whatever I saw in those days, I'll never be able to forget. It's through that process that I found out that after the North Pole and the South Pole, the largest collection of ice and snow on Earth is in the Himalayas above Pakistan. So not the penguins and the polar bears. The question we have to ask is what's going to happen to the 250 million people of Pakistan when first we are faced by perpetual flooding, riverine flooding, unlike the monsoon flooding that we saw earlier, and then inevitably we're faced by perpetual drought. اب یہ ایک ایکسسٹینشیل کرائسس ہے ہمارے لیے. ہمارا ذمہ داری ہے, میرا آپ کا ہے کہ ہم پاکستان کے عوام کو اس ایشو کے بارے میں آگاہ کریں, اور انٹرنیشنلی بھی پاکستان کے لیے یہ جو تو جہد لڑے, یہ لوگوں کو سمجھائیں جو کہ ابھی تک وہ شاید سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم واقعی ہی ایک فرنٹ لائن اسٹیٹ ہے, کہ اس کے باوجود کہ ہمارا 1% کنٹریبیوشن ہے, ہمارا ایکسسٹینشیل کرائسس ہے. اس کے لیے ہمیں نہ صرف پورا پاکستان کی, ہمیں ٹیکنیکلی یہ کرنا چاہیے تھا as soon as we finished after the last flood. I had serious reservations about that budget that came after the flood. You don't have to go as far as I'm proposing, but anyway, I'll get into that later. Sorry. میرا جو پروپوزل ہے کہ ہم اپنا پورا ڈیولپمنٹ کا جو طریقہ کار ہے پاکستان میں, ہم وہ بھول جائیں اب, اور ہم سروائیول موڈ میں چلے جائیں. ہم پاکستان میں ایک کلائمیٹ ریزیلینٹ پاکستان کو بنانا شروع کرتے ہیں, اور ہم اپنا اڈیپٹیو کلائمیٹ کے لیے اپنے آپ کو, کلائمیٹ چینج کے لیے اپنے آپ کو اڈیپٹ کریں, اپنا کمیونیکیشن انفراسٹرکچر کو, ہمارا اریگیشن انفراسٹرکچر کو, ہمارا ایگریکلچر کا نظام کو, ہمارا تمام جو ڈیولپمنٹ اسپیلڈ ہوگا, ایک تو اس میں اضافہ ہونا پڑے گا, نہ صرف پاکستان کی حکومت کی فنڈ سے, پبلک سیکٹر سے, پرائیویٹ سیکٹر سے, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے, انٹرنیشنل فائنینس سے, اور ہمارا اپنا ویل ہیو ٹو پٹ پاکستان's money where its mouth is. And through that development, we will create also, we'll be able to prepare ourselves for climate change. We'll also create and stimulate economic activity and create job opportunities across the country. Because all of the country is affected by climate change. Gilgit Baltistan میں ان کا اپنا گلیشیئرز کا فکر ہے, پختونخوا بھی اسی سیلاب میں ڈیمیج ہوا تھا, اس سے پہلے فارسٹ فائرز تھے. میں لاہور سے ابھی ہو کر آیا ہوں, تو سانس تو نہیں لے سکتے ہیں وہاں. سندھ اور بلوچستان دونوں تو 2 دہائی ہمارا سرزمین پانی میں ڈوبا تھا. اس سے پہلے ہمارا قحط کا, like literally the longest drought. So we have to wake up to the fact that we have this existential crisis. That is our logic behind rejigging Pakistan's financing mechanisms. When I say that I'm going to provide 300 units through solar electricity to the poorest of the poor in Pakistan, I'm also addressing sort of poverty in a time of inflation, etc. I'm covering portion of the vulnerable population. But what I'm actually doing is stimulating Pakistan's energy transition. And when we invest in this scale on solar energy, and we provide the poorest of the poor this facility, this will set the ball rolling in a big way for our domestic use. In addition to that, what I'm proposing is in every single district, and I think we could have started this in our government, and another long story behind why that didn't get off the ground. Every district in Pakistan, ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے طریقہ کار سے
ग्रीन एनर्जी पार्क्स बनाएं, हम हुकूमत जो है वो ज़मीन दे, उसका शेयर वो होगा, प्राइवेट सेक्टर आके इन्वेस्ट करे सोलर में, विंड में, जहाँ हाइडल है हाइडल हो, जहाँ दूसरा है दूसरा हो, और इस तरीके से हम कम कीमत पे आवाम को ऑफ ग्रिड बिजली सॉल्यूशंस फराहम करें. आप कराची में लेते हो. आई एग्री विथ यू, बट जो मैं हाउ पूछ रहा था, दैट्स द वीड्स आई वांटेड. जिस तरह बीच में आपने बोला जो फर्टिलाइजर पे सब्सिडी मिलती है, एलीट सब्सिडीज का आपने जिक्र किया, हम इस पॉडकास्ट पे कुछ 2 साल से रो रहे हैं उसी के बारे में. बट आई वांट टू गेट इन, व्हेन आई से हाउ, व्हाट डू द वीड्स ऑफ दोज लुक लाइक? अगर मुल्तान में मैंगो फार्म स्टूट की DHA मुल्तान बनता है, आर यू गोइंग टू roll that back? Are you going to roll back subsidies to 4G fertilizer? Well, we have to. If all fertilizer are losing subsidies, the 4G fertilizer will also lose subsidy. वो तो एक हकीकत है. But don't take every argument into an anti-establishment. No, just give me the weeds of it, right? Weeds तो आप वही weeds निकालते हैं ना. आप कुछ और निकाल दे. सिर्फ weeds ये नहीं है. It's not all about. Look, that was a so let me tell you about my tariqah. Like how this I wrote myself. I prepared myself, and I sat with people who helped us with the Benazir Income Support Program. And what did we do? Pretty simple. We highlighted, okay, what are the main problems that are facing Pakistan today? Please read it and give it like an audio version to your podcasters. Otherwise, I'm going to have to read it for them. So that I want them to be able to hear what we're saying. But so, हमने सोचा कि okay, inflation, unemployment, poverty, these are our main issues. We want an agenda that can address these issues. Came up with an agenda to address these issues. How are you going to fund these issues? To my shock and horror, like, did you know that every year, I thought it was like much less than that. Every year, the 300 billion was spent on just running these ministries that shouldn't exist. That they should have devolved. They always complain that the provinces. When you open the books, you find out it's literally the other way around. The burden is the federation continuing those ministries that no longer deserve to exist. The second thing, actually subsidies ka, IMF ke kehte ki they only want targeted subsidies, so that's fine. That's, let's find that gunjaish ki targeted subsidies ho. Uske liye jab math kiya gaya, 1,500 billion rupees a year, like I didn't know that we could afford that. We can't afford that. Hafiz Pasha has done some great work over there. उस subsidies को detail में बताने के लिए. Hafiz Pasha is a great economist. His wife was the Minister of State in our government, probably one of the last remaining voices of reason in the Ministry of Finance near the end of our government. बिल्कुल ही आप सही कह रहे हो. तो जब आपके पास ये इन्फॉर्मेशन हो और साथ साथ ये पता हो कि हम पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे मुश्किल मुआशी बहरान से गुज़र रहे हो, तो for me it's a no-brainer. The way to do it is for me to form my government on after February 8th and shut these ministries, shut these subsidies. The theory is that obviously there's an entire elite infrastructure. It's not just one institution. There's an entire elite infrastructure across the country that is very vested in this system continuing. There will be a visceral reaction. My hope is, my thought process is, because we're spending that money on the people of Pakistan, because the laborer is getting their pension or their stipend through the Mazdoor card, because the youth is getting their unemployment support from the youth card, because the Kisan is getting their subsidy directly in their pocket, that no matter how much they scream, the people of Pakistan will stand with me, and then hopefully we'll be successful in implementing these reforms. Second point, that you aim for the sky. I am aiming for the sky. Hopefully I don't crash and burn. Hopefully we're successful, because it's the only way I see. I mean, if you have another way, please show me that we can show real results to the people of Pakistan. Show that the most vulnerable in this country, that they not only have a stake in this economy, but in this government and in this country. So I agree with you, but कभी-कभी ये होता है कि जो चीज़
آن دا گراؤنڈ ہوتی ہے وہ اس کے برعکس ہمیں نظر آتی ہے. اینڈ وین آئی سے اسٹیبلشمنٹ آئی ڈو مین دا ایلیٹ ایز ویل رائٹ. اگر کراچی میں بحریہ ٹاؤن بنتا ہے تو اگر سندھ ولیجز سندھی جو ہمارے گاؤں والے لوگ ہیں وہ ایکوائر ہو رہے ہوتے ہیں, سندھ پولیس از ناٹ اسٹینڈنگ ود دا ولیجز, دے اسٹینڈنگ ود ملک ریاض. اگر ملیر ایکسپریس وے بن رہا ہے تو ملیر ریور جو لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, why is PPP seen to be standing with Bahria town and not the villagers? پروٹیسٹ اس کے پوائنٹ کو بالکل آن بورڈ لینا چاہیے. یہ امپریشن دینا کہ سندھ پولیس بحریہ ٹاؤن کے ساتھ کھڑے ہیں اور عوام کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں, ان کا ایک مجبوری ہے کہ سابق نثار نے ایک عدالتی فیصلہ دیا جو مطلب سپریم کورٹ کا ایک حکم بن گیا ہے. ہم اس کو آپ لوگ بڑا سیلیبریٹ کرتے ہو کہ پتہ نہیں کتنے ارب جو ہے اس کو پے کرنا پڑے گا, رائٹ, بٹ دا ڈیول از ان دا ڈیٹیلز, اینڈ دا ڈیول ان دا ڈیٹیلز از دیٹ از آپ یہ پے کرے اور کانسٹیٹیوشنلی یہ مطلب ناٹ لائک اے لٹل بیوروکریٹ جس کو آپ سزا دلوا سکے یا کسی نارمل چیز جو آپ ایزیلی فکس کر سکتے ہیں. آپ کا شکایت ہوگا, آپ کا شکایت مجھ تک پہنچے گا, کسی تک پہنچے گا, وہ حل نکال سکے. پولیس کے سامنے یہ اب کانسٹیٹیوشنل سپریم کورٹ کا حکم ہے کہ یہ ہے ان کا نقشہ. کل میں اٹھوں اور کہوں نہیں یار یہ تو کوئی غلط ہوا ہے, ایسے نہیں ہونا چاہیے, پولیس میرا نہیں سنے گا, ان کا نہیں سنے گا, وہ کہیں گے کہ یار سر میں نے یہ کرنا ہے. اگر وہ نہیں کرتے کیا ہوگا اس پولیس آفیسر کے ساتھ؟ اس کا کنٹیمپٹ لگے گا کورٹ میں, اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. تو اٹس ویری ایزی ٹو سٹ آن سوشل میڈیا and present everything as in black and white, but actually that's not the way the sausage is made. But there's a lot more gray visible. There's a lot more gray shades of gray than there is black and white. My point is that let's leave what's happened in the past and let's deal with the crisis at hand. We've identified the crisis at hand. I've identified my solutions. I'm open to hearing yours, anyone that's a better solution, but I'm quite confident that this is the way forward. I would have been sold on your solutions if you were a new party. The question is, جب آپ کہتے ہیں کہ ہم جب یہ کریں گے عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی, بٹ وی ہیو ناٹ سین یو اسٹینڈنگ ود دیٹ عوام, رائٹ. ٹھیک ہے آپ لیگلی کچھ نہیں کر سکتے, آپ پروٹیسٹ کریں, آپ کی مرضی کہ آپ سمجھے کہ وہ عوام ہو, رائٹ, کہ کراچی کی ایلیٹ جو ہے جو کہ اس کو چیز کو پسند نہ ہو وہ وہی عوام ہے. اور میں بالکل سر ہم اسلام آباد میں تو اپنا پوائنٹ تو ایٹ لیسٹ مجھے پوری طریقے سے بنانے دیں. آپ کا موقف یہ ہو سکتا ہے کہ ہم عوام کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں. میرا موقف تو آبویسلی مختلف ہے کہ ہم نہ صرف میں عوام کے ساتھ کھڑا ہوں مگر ہم 3 نسلوں کے ساتھ عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. اسی عوام کی خاطر میری والدہ نے اپنی جان کی قربانی دی, میرا نانا نے اپنا جان کی قربانی دی. یہ آپ اس لیے کیوں دے رہے تھے کہ اپنا ذاتی انا کی وجہ سے نہیں, اس لیے وہ اپنی عوام کے ساتھ کھڑے تھے. میں آج بھی سیاست ان تمام قربانیوں لائف کی سیکیورٹی تھریٹس کے باوجود اس لیے کر رہا ہوں, اس لیے میں عوام کے ساتھ کھڑا ہوں. میرا جو نظریہ ہے, میرا جو موقف ہے, میرا جو پولیٹیکل سوچ ہے, وہ میرا حق ہے کہ وہ کیا ہونا چاہیے. یو کانٹ ٹیل می کہ آپ کا پولیٹیکل سوچ یہ ہونا چاہیے کہ DHAs نہیں بننا چاہیے, صرف مینگوز بننا چاہیے, رائٹ. وہ میرا مرضی ہے کہ میرا پارٹی کا میرا اپنا سیاست کیا ہے, مگر میں اپنے عوام کے ساتھ کھڑا ہوں. جب بھی عوام کو حق ملا ہے وہ پیپلز پارٹی کے تھرو ملا ہے, جب غریب عوام کو حق ملا ہے تو پیپلز پارٹی کے تھرو ملا ہے, جب مزدور کو حق ملا ہے تو پیپلز پارٹی کے تھرو ملا ہے, جب کسان کو حق ملا ہے تو پیپلز پارٹی کے تھرو ملا ہے, جب جمہوری آئینی ترمیمیں کیے گئے ہیں, چاہے وہ 18ویں ترمیم ہو, چاہے وہ NFC ایوارڈ ہو, چاہے وہ صوبے کے حقوق ہو, چاہے وہ the only social safety net in this country, پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ چاہتے ہو کہ جو آپ کا اپنا ایشو ہے, چاہے وہ بھاریا کا ہو, چاہے وہ DHA کا ہو, یا جو بھی آپ کا اپنا ایشو, کہ آپ اس ایشو پہ بھی یہی لائنیں, ورنہ آپ تو عوام کی فکر ہی نہیں کرتی ہیں. سو آئی تھنک دیٹ اگین شیڈز آف گرے, the world is not like that. Pakistani politics is not like that. Politics is always the art of the possible. Otherwise I could be an activist,
I could be an activist and I can go on the streets and protest that we should have an ideal utopia. But what you do when you're in politics is you achieve what is possible. You shoot for the stars, and I'm shooting for the stars. I believe that we can make this country a far better place than it is. But it's always a compromise to achieve what you can achieve. So not always ideally what you'd like to achieve. Credit where credit is due. Benazir income support program, great. General Zia looked like he would rule over forever. Benazir came back, led that Imran protest. also looked like phenomenal. he would rule over forever. Musharraf, great work. But when I say people, it's not one issue, right? Maharang Baloch did protest not very far from here. मैं तो यहाँ मैंने हर प्रोटेस्ट में खुद जाके बैठना है भाई. आप बताइए, पब्लिक सपोर्ट भी नहीं नजर आया. प्लीज आप इतना भी तो सुने ना, और लाइक समझे और पढ़े, या सिर्फ ट्वीट्स पे ना जाए. यही तो मसला है इस मुल्क का कि आजकल ना जर्नलिस्ट जर्नलिज्म करता है, ना स्टूडेंट स्टडी करता है. वो ट्वीट में मैंने देख लिया तो सच हो गया. आपको पता है कि तमाम मेरा ह्यूमन राइट्स विंग का सदर फरदुल्लाह बाबर साहब पूरा वक्त वो कोई नॉन एसोसिएटेड बंदा नहीं है. वो मेरा साबिक सेक्रेटरी जनरल और मेरा ह्यूमन राइट्स विंग के सदर उनके साथ थे. मेरा PSF, मेरा PYO उनके साथ थे. मैं बलूचिस्तान में जलसा करते हुए बात करता हूँ कि ना सिर्फ कि हमारे बलूचिस्तान के देखिए कि क्या दुख उनका है कि हमारे बहनों जो हैं वो लापता अफराद के लिए जो है एहतजाज कर रहे हैं. दूसरी तरफ हमारा शोधा का दहशतगर्दी का जो है लोग एहतजाज कर रहे हैं. ऐसे नहीं होना चाहिए पाकिस्तान में. जैसे मैं पहले कह रहा था, सियासी तरीके से चीज़ों को इंगेज करके हल निकालना चाहिए. बट अगेन देयर इज़ दिस तरीका, कॉल इट सोशल मीडिया पॉपुलिज्म, कि मैंने आपको वहाँ नहीं देखा तो ये भूल जाते हैं कि अगर कोई मिसिंग पर्सन कमीशन बना तो वो पीपल्स पार्टी की वजह से बना. ये हम भूल जाते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही ये इशू नेशनल लेवल पे लेके चलती आ रही है. ये हम भूल जाते हैं कि जो भी हुकूक बलूचिस्तान को मिले वो सिर्फ पीपल्स पार्टी ने दिए. साइल वसाइल की जदोजहद दूसरे करते हैं सपोजिटली अपने आप को बतौर उनके, और साइल वसाइल दिलवाते हैं तो पीपल्स पार्टी दिलवाते हैं. 18वीं तरमीम के तहत, NFC अवार्ड के तहत, आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान के तहत, मिसिंग पर्सन कमीशन, हमारा एक पहला पाकिस्तान की तारीख में हमारा कोशिश था कि इसका हल निकाला जाए. नाकाम रहा, कोई और हल निकाला. बट ये एब्सोल्यूटिज्म कि मैंने आपको ये जगह नहीं देखा और वो भी खुद नहीं देखा, तो इसका मतलब ये है कि यू आर प्रो मिसिंग पर्सन्स. ऐसे बिल्कुल बात नहीं है. पाकिस्तान में और कहीं भी दुनिया में सियासत होता है, एंड पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल. दिस unfortunate reality, and it's not only our reality, it's a reality in unfortunately in the UK now as well, in America, all over the world, कि extremes पे सियासत किया जाए. I grew up at a time when winning in politics meant कि आप वो दरमियानी रास्ता निकालें, वो विन-विन सॉल्यूशन निकालें जिससे आप एक बहुत बड़ा मसला का हल निकालें. और उसमें आपको एक दो चीज़ें पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, दूसरा को कोई एक दो चीज़ें पे कॉम्प्रोमाइज़ करके यू टेक आउट अ सॉल्यूशन फॉर अ प्रॉब्लम. व्हाट पॉलिटिक्स हैज बिकम हियर एंड एल्सवेयर is the fringes. You're the like you have to be pure, and if you're like not pure enough, then you're not good enough. And us tarike se it undermines the ability to create the consensus necessary to get things done. So that's not the way that I prefer to. I mean, that's why I'm here to ask your opinion about all these things. It's just जब टिकट्स देने पे आते हैं, सरफराज बुख्ती joins PPP, not a Baloch activist. Specifically, अगर मैं एक और सवाल पूछूं, what does it mean? Baloch activist doesn't join a PPP. Sarfaraz Bhutto joined the PPP. It shows that you're owning the caretaker government setup. Then, ना अगर interior minister PPP join करते हैं. Left the caretaker government to join me. Owning the caretaker government is a real stretch. But anyway, whatever. Agar specifically, let me just the point, because this is exactly the same as, and it means that I didn't successfully explain my point. In politics, I have an ideology, I have a vision, I have a manifesto that I put forward. People join me, I don't join them. I don't come onto his page
X, Y, and Z, whoever you pick up the page, they come onto my page. Above and beyond that, if I want to implement my manifesto, I have to win elections. And in order to win elections, there's electoral politics that's involved. It might not look pretty to the activists, but the activists can't win an election. If they could, they would. But then once you win an election, you have to leave your activism at the door when you come to Parliament. Because when you come to Parliament, your job is not to be an activist anymore. Your job is to get things done. So if I just stand in the corner and scream myself hoarse, then I'm not actually getting something done. So the point of this is कि जो लोग सुन रहे हैं, I get politics में आपको compromise करना पड़ता है, and you're not unique in this, every party does. No. उसमें question then becomes कि लोगों के लिए for a voter, one person can decide कि यार PTI ने ये compromise किया, मैं इनको वोट नहीं दे सकता, and that's their decision. जिस तरह मैंने अभी announce किया कि आप आ रहे हैं podcast पे, half of the comments were asking about Nazim Jokio. एक high profile case हुआ जिस पे high profile protest हुई. हम कह सकते हैं चाहे इमरान खान को उस वक्त हटाना जरूरी था, he came and voted. Let that aside. But the alleged murderer has been awarded a ticket by PPP again. See, there you go. So again, I just wish that these social media mobs that develop online would sort of engage with the reality of the situation. And for me, it's never ever one case. Okay, I do politics in Pakistan, and I'm more often than not mostly on the receiving end of hardship, of difficulty from the establishment. उस सूरत हाल में आप कह सकते हो मुझे कि ये जो रियाज है ये बड़ा कड़ा पंदा है, आप इसको हटा दें, ना आप इस पे नैब के केस डालें, ना आप इस पे एंटी करप्शन के केस. मुझे पता है कि आप सिर्फ तब करप्ट हो जब तक आप मेरे साथ हो. आप जैसे ही and I'm not suggesting you do any corruption, I mean you're not, but आप पे इल्ज़ाम यही लगेगा, आप पे केस यही बनेगा, जब आप मुझे छोड़ते हैं आप करप्ट नहीं रहते. You have to at least have a bare minimum, or at least you come to terms of having the bare minimum of you're innocent until proven guilty. That's the standard that I have to use in my party. I can't just say कि आपने तो ट्वीट कर लिया या आपने इल्ज़ाम लगा दिया and अब मैं आपको कॉन्विक्ट समझ के आपको सज़ा सुनाओ. उस केस में जो हुआ कि जो सेटलमेंट रीच किया गया, आपको मालूम है कि पाकिस्तान के तमाम सियासी जमातों में वो कौन सी सियासी जमात है जो आज से नहीं, जो बार बार आइन में, कानून में वो तरमीनें लेकर आना चाहते हैं ताकि आप वो कंसेंसस ना कर सके. ना सिर्फ इस स्पेसिफिक केस में, मगर किसी केस में हम ये लूप होल ना छोड़े जहाँ आपके हाथ बांधे जाते हैं और सवालात उठ सकते हैं इंसाफ के प्रोसेस पे. उस कानून में सिर्फ मैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज तक तरमीम लेकर आते हैं. कल मैं पार्लियामेंट में होता, मैं वो बिल प्रेजेंट करने के लिए तैयार हो, तो ना PTI मेरे साथ खड़ा हो जाता जिसने सबसे ज़्यादा शोर मचाया, ना मियाँ साहब ने तो माजी में भी इसी चीज़ पे हमारा 90s में क्लैश भी हुआ कि वो तरमीमें नहीं लेकर आते. जहाँ तक टिकट की बात है, आई डिड नॉट गिव द पर्सन स्पेसिफिकली अक्यूज्ड अ टिकट. उसका भाई उसी घर में रहते हैं, उसका भाई पे भी इल्ज़ाम लगाया. जो तशवीश हुआ उसमें ये निकला कि आप वो इल्ज़ाम सब पे नहीं इस तरीके से लगा सकते हैं जिस तरीके से मीडिया पे लगा. आई थिंक इट वुड बी वेरी अनफेयर इफ़ मैं, आई डोंट नो इफ यू हैव अ ब्रदर, मगर आपका भाई की गुनाह की वजह से आपको सज़ा, मोर लाइकली मेरी वजह से उसको उठा लिया जाएगा. वो तो शरीफ आदमी है बेचारा. एग्जैक्टली, वो तो शरीफ आदमी या ना हो, वो तो अपनी जगह. तो जो कि जिसके इल्ज़ाम लगा उसके पास आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का टिकट नहीं है. और आप मुझे दूसरा जमात दिखा दें जो ये काम करे. आप चाइल्ड रेपिस्ट निकल जाएंगे जो एटलीस्ट नॉट खुद, होपफुली नॉट खुद, बट वो पूरा जो एक इल्ज़ाम, I mean Ali Amin Gandapur was accused of parading a girl naked, but he's a part of PTI. हम वो जमात हैं जो कि ओके, नॉट जस्ट ऑन एक्यूजेशन, बट जहाँ मुझे गुंजाइश है एक एम्बिट के विद इन एक दायरा में मैं ज़रूर एक्शन लूँगा. मैं क्यों, वाई वुड आई वांट, मेरे पार्टी वर्कर्स थे, वो किसी और को तो वोट नहीं देते. ये जो जिस शख्स का आप जिक्र कर रहे हो वो ज़रूर मेरे पार्टी का टिकट होल्डर है. वो उसने मेरे पार्टी को ज्वाइन किया था और रिश्तेदार हैं मैंगल साहब के. आई डोंट हैव एक्सपीरियंस विद जो
MP ये था लेकिन जामवे साहब, लेकिन जो मेरे साथ MNA है उसने तो मेरे साथ बहुत मेहनत किया है नेशनल असेंबली में, ख़ास तौर पे ये अदम एतमाद और इन तमाम इस तमाम दौर पे इनफैक्ट इसी चीज़ का ब्लैकमेल हो रहा था इन पे कि इनको इस चीज़ पे सज़ा दिलवाया जाएगा अगर वो खान साहब के ख़िलाफ़ वोट डालने और वो पूरा अदम एतमाद के सिलसिले में हमारे साथ देते, लेकिन वो डट के खड़े हुए। जिसको कत्ल किया गया, जो वो वहाँ के लोग हैं वो मेरे हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, मैं क्यों किसी और का साइड लेना चाहूँगा? बट इट्स नॉट समथिंग दैट बिकॉज ट्विटर स्टॉर्म आ गया है तो मैं अभी से अब जो फाइनल एक्शन है वो अपने हाथों से अभी से कर लूँ। मुझे जब मौका मिला वो सिर्फ तब था जब पार्टी टिकट्स हो रहे थे, तब उस आदमी को, जो कि आई थिंक टेक्निकली आई शुडंट से बिकॉज व्हाटएवर इस्लामिक तरीक़ेकार से इन्होंने आपस में जो भी किया वो भी हुआ है, मगर इस कंट्रोवर्सी के बाद उस शख्स को टिकट नहीं दिया गया। ये जो प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि हमने टिकट दिया, एक तो सच नहीं है, और दूसरा वही लोग उन जमातें को सपोर्ट करते हैं जो इस लूप होल को जानबूझ के एड्रेस नहीं करवाते। इसमें अक्रॉस द बोर्ड भी अगर हमें, आई एम जनरलाइजिंग, इफ आई एम रॉन्ग प्लीज़ करेक्ट मी, इवन दो आई डोंट थिंक आई एम, ज़्यादातर हम जो देखेंगे टिकट डिस्ट्रीब्यूशन वो PPP का फ्यूडल क्लास में ज़्यादा लोग इलेक्शन रन कर रहे हैं एज अपोज टू हमें नए फेस या एक्टिविस्ट या यूथ नजर आए। Either way, any जैसे वो शायद, डोंट यू एग्री दैट एक चलें परसेप्शन ये है कि फ्यूडल ज़्यादा हैं PPP में, स्पेशली इन सिंध। You had a podcast where this was all explained very well to you, so I think but the people want to listen from you. चलें कंफर्म भी हो गया कि आप पॉडकास्ट सुनते हैं, मुझे अक्सर शक था। Especially where she said that it's a very racist impression that in Sindh it's only the feudal context in which the Pakistan People's Party is voted for. But that's not true. The only party that is anti the feudalism status quo is the People's Party. There is an innate contradiction in that some of the people with the party, even at the time of my grandfather, including my grandfather himself, were also landlords. But that doesn't equate to the same mindset. And obviously my grandfather was the one who passed land reforms, etc. But it also brings us back to the other sort of question that I was responding to. In order to achieve what I want, not what Falana a ticket holder ya Falana electable ya Falana whoever, or to achieve what I want, I have to win elections. उस combination में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपने वर्कर्स हैं, अपने लोग हैं, अपने सियासी, I mean मुर्तज़ा वहाब जिसको सबसे ज़्यादा वडेरे होने का इल्ज़ाम लगता है, कौन सा वडेरा है? सईद गनी कौन सा वडेरा है? मुझे पता चला परफ्यूम दुकान भी उनकी नहीं है। कृष्णा कुमारी होगी थर की वडेरी, राइट, जिसको हमने सेनेट में भेजा। हम इलेक्शंस तो हमने जीतना है। मैं मानता हूँ कुछ जो मैंने सियासी पीपल्स पार्टी के भी जो सियासी कारकुन रहे और 100% सियासी कारकुन होते हुए अपने सीट्स संभाले, वो अब थोड़ा बहुत अपने तरीके से भी एक किस्म का वडेरा ही बन गए हैं, वो एक दूसरा क्रिटिसिज्म है। बट टू से दैट द पीपल्स पार्टी रिलाइज ऑन द फ्यूडल नेटवर्क फॉर इट्स इलेक्शंस, that is not the case. I don't need to win elections. I need to have people who can win elections. If the ideal is only to have activists run elections, that's sweet, but I'd lose. And we then have a sort of rightist agenda completely implemented on us. तो हमने बिल्कुल अपने ट्रेडिशनल टिकट होल्डर्स जो कि इलेक्शंस जीतते आ रहे हैं, कुछ नए लोगों को टिकट्स दिए हैं। मेरा कोशिश हमेशा ये रहा है कि मैं नौजवानों को आगे लेकर आऊँ। इट्स नॉट समथिंग दैट हैपेंस ओवरनाइट। आई कांट जस्ट से ओके लुक योर पॉडकास्ट इज डूइंग वेल and your ratings are great, but you're getting a bit old, so like we'll take your hard work and I'm just going to have a younger guy sit there. I do feel that. And run the show. So it's not that easy. एक नियत होता है, कोशिश होता है। मैंने तो बनेर से लेके कराची तक young women को भी टिकट्स दिए हैं पीपल्स पार्टी में। कराची के जो बल्दी इलेक्शंस हुए उसमें मुझे एक मौका मिला
एक बार फिर, and again, it's very difficult because in order to win elections and local bodies is all about local fights. It's once you get through that process that I think people don't understand. They just think that आप जाते हैं, आप GA Bhutto कहते हो और आप election जीत जाते हो. Once you get through that process, I made an active effort. My mayor Karachi is young. My mayor Hyderabad is young. My mayor Sakhar is young. My mayor Larkana is young. None of them can be accused of being Vadera in the social media Islam ka context. But bilkul think of us as a big tent party then, if you like. We have all sorts and all walks of life in our party. We don't discriminate on the basis of. I wouldn't just give a ticket. If I thought that my party worker could win an election or कि वो जीत पाएगा, मैं तो ना सिर्फ कोशिश करूँगा, मैं रिस्क लेके भी करूँगा. But it's not as black and white. It's been a long day for you and thank you so much for your time. मुझे उस्मान कह रहे हैं 2 मिनट रह गए हैं, तो let me just get a couple of questions in unless you have more time. उस्मान ने मुझे वादा किया कि इलेक्शन के बाद एक 3 घंटे का भी पॉडकास्ट होगा. 3 घंटे के पॉडकास्ट करेंगे हम 6 घंटे की भी कर चुके हैं. So let me just get 2 questions in before you call it a night. कराची का क्योंकि जिक्र हुआ है, we probably don't have time to get into the weeds of the technicalities of how democratic the local government election was. But agar I can go toe to toe on how democratic the Karachi election was. Those people who've literally ruled Karachi by spilling its citizens' blood, who have never once won a democratic election and have only come through rigging, have the nerve to use Pakistan People's Party, who in each and every single one of those elections came close to winning and was robbed of the opportunity of winning unfair. It's not my fault that the MQM decided not to run. They literally वो डर रहे थे कि हम तो नहीं मुकाबला कर सकते, तो इन्होंने नहीं लड़ा. But it wasn't only Karachi, ना पूरा सिंध में इलेक्शन हुआ, right? कराची में सिर्फ इलेक्शन नहीं हुआ. Actually उस वक्त तो पूरे मुल्क में सिर्फ एक पार्टी था जो कह रहा था, well, not सिर्फ एक पार्टी जो हमारे इत्तेहादियों में से जो कह रहा था नहीं इलेक्शन करो, वो तुम्हें था. मैंने लड़के ये बल्दियाती इलेक्शंस करवाए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहली बार अपना मेयर हैदराबाद और मेयर कराची बनाया है. ये मेरे लिए एक ऐसा मौका है कि इंशाअल्लाह ताला अब अगर कराची के अवाम हमारे साथ जनरल इलेक्शंस में भी साथ देते हैं, अगर मेरा MPA और MNA भी जो है कराची से अक्सरियत में मुंतखब होते हैं, तो मेरे लिए वहाँ काम करना आसान होगा. सबसे बड़ा रुकावट ये होता था कि बल्दियाती निज़ाम हमारा सबसे बड़ा शहर में हमारे मुखालिफ के साथ होता था, और वो भी कैसे मुखालिफ. आपने देखा, आप खुद आप कराची के रहने वाले हो. I trust you to do your own like hand on heart impartial analysis कि मुर्तज़ा वहाब का एडमिनिस्ट्रेटर प्लस चंद महीने जो अब मेयर रहे हैं, वो भी विद एन इंटरिम गवर्नमेंट, नॉट विद आवर इलेक्टेड गवर्नमेंट लाइक इट विल बी. अब वो ज़रा कंपेयर करें हमारा इस दौरान का कराची को और उनका कराची को, और उम्मीद ये है कि हम इसी पेस के साथ इंशाअल्लाह ताला बेहतरी लेकर आएंगे. अगर दूसरी जमातों के नुमाइंदे आएंगे तो वो मेरे लिए वो रुकावटें डालेंगे काम में, वो हमारे लिए एक सहूलत नहीं होगा. तो मेरा जो अपील है कराची के अवाम से कि आपसे मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ. आपने बल्दियाती इलेक्शंस को मुझे पहली बार अपनी तारीख़ में जितवाए हैं. मेरा मेयर तो आ गया है. मैं इसी शहर में पैदा हुआ हूँ. इट्स माई ओन सिटी. आई कांट एक्सप्लेन कि जो कनेक्शन आपकी अपना शहर के साथ होते हैं. मैं अपना शहर की तरक्की मैं अपना किरदार अदा करना चाहता हूँ. मेरे पास एक मौका है. मैं मानता हूँ कि मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, मगर एक खलूस नीयत के साथ मेरा बल्दियाती निज़ाम हो, मेरा ये सूबाई इलेक्शंस में, और वो भी सूबाई गवर्नमेंट भी हमारा बने, और हमारा कराची के नुमाइंदे, वहाँ के लोग मेरे अपने नुमाइंदे हों,
وہ اپنے ایشوز مجھے بتائے کہ آپ اپنا پیسہ اس چیز پہ ضائع نہ کرے, ہمارا اس محلہ کا ایشو یہ ہے, آپ یہ حل کریں. میں نے اپنا کیمپین میں آلریڈی وعدہ کیا ہے سندھ بھر میں کہ اس بار جو بجٹ ہے وہ کراچی کی بیوروکریسی دفتروں میں نہیں بنائیں گے. ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ہر ڈسٹرکٹ میں جائیں گے, کراچی میں بھی ہر ڈسٹرکٹ میں جائیں گے, وہاں کھلی کچہریز رکھیں گے, مل کے اپنا منصوبہ بندی کریں گے کہ یہ آپ کا پیسہ ہے, یہ میرا کنسٹرینٹس ہے, اس کنسٹرینٹس میں ہم اپنا ترقی. اگر کراچی والے کہتے ہیں کہ 15 سال سے تو سندھ حکومت PPP کے پاس ہے, اگر ہم کراچی کے حالات دیکھیں, آپ کے ایکچوئل محلے کی بات کریں, لیاری میں گٹر کے ڈھکن کھلے ہوئے ہوتے ہیں, پانی نہیں آ رہا ہوتا. when people see that what is the performance that people should vote on? ایک تو سب سے پہلے یہی ضروری تھا, یہی وجہ تھا کہ ہمیں بلدیاتی نظام پاکستان پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں ہونا ضروری تھا تاکہ ہم یہ بنیادی ایشوز کو ایڈریس کرنا شروع کرتے. جہاں تک میرا 15 سال کی پرفارمنس ہے, ایک تو 15 سال پہلے میں یونیورسٹی میں تھا, تو اگر آپ میرا یونیورسٹی کا پرفارمنس دیکھنا چاہیں, چیئرمین آف اے پارٹی, I was the chairman of the party, so if آپ کا میرٹ ہے, so your party's performance, اگر آپ سمجھ تو میرا پارٹی کا پرفارمنس آپ بالکل دیکھنا چاہیں تو پھر میں 15 سال کا جو تھا تو تب بھی پارٹی کا پرفارمنس دیکھوں. آئی تھنک میرٹ یہ بنتا ہے کہ جو میرا اپنا پرفارمنس ہے اب وہ دیکھے میں نے کیا کام کیا ہے اس شہر میں جب سے میں کام کر سکا. اور میں کہہ سکتا ہوں کراچی کے عوام کو کہ میرا سیاست آنے سے بفور آئی کیم ٹو پالیٹکس, آپ NICVD کا حالت دیکھ لیں اور آج آپ اس کو دیکھیں. میں کراچی کے عوام کو نہیں, پورا صوبہ کا عوام کو مفت دل کے علاج دلواتا ہوں, عالمی سٹینڈرڈز کا کرتا ہوں. مصطفیٰ کمال کی باپ یہ ہاسپٹل نہیں بنا سکتا تھا. ہم نے اس نیٹ ورک کو نہ صرف ایک ادارہ میں, I see you guys smiling, I don't know if you're going to have to censor that, but مطلب یہ ہم نہ صرف ایک ہاسپٹل, اس نیٹ ورک کو کراچی کے ہر ڈسٹرکٹ میں ان کا یونٹ, سندھ کا ہر ڈسٹرکٹ میں یونٹ, ایک کام بتائے جو MQM اور باقی لوگ جو واقعی خود, ناٹ ان کے بچے یا ان کے والد, وہ خود جو اقتدار کر رہے تھے, ایک کام اس کا مقابلہ کر لے. آپ کوئی دوسرا ایگزامپل اٹھا دے, آپ JPMC کا حالت اٹھا کے دیکھ لیں. وہی عورت جو جب ہم نے اب وہ روما جو تھی سیدھی, yes, she, when the 18th Amendment was part, she said I have one bullet and I'm going to use it on Raza Rabbani if I had one bullet. ایسے کچھ اتنا وہ ڈر رہی تھی کہ یہ اب صوبائی حکومت کے حوالہ ہوگی تو ہمارا JPMC کا کیا ہوگا. جب ثاقب نثار ہمارا ان اداروں کو لے رہے تھے, کس کا دفاع کر رہی تھی, وہ کر رہی تھی. کچھ ہم نے ایک انقلاب لے کر آئے ہیں ان صحت کے اداروں میں. سائبر نائف کی جو ٹیکنالوجی ہم نے پیشنٹس ایڈز فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کے, سندھ حکومت ایک نہیں شاید 2 بن گئے ہیں اب جو ہم فنڈ کر رہے ہیں. دنیا میں آپ کو اس ٹریٹمنٹ کو مفت نہیں ملتا ہے, وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کراچی کے شہریوں کے لیے مفت دلوایا ہے. چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کا, اب آپ نے پوچھا میں نے تو گنوانا ہے, چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کا ایمرجنسی رومز ایوری سنگل ڈسٹرکٹ میں بچوں کے لیے جو چلڈرن کی ایمرجنسی رومز ہے وہ 100% مفت ہے. آپ خود جا کے, انفیکٹ آئی وش وی ہیڈ مور ٹائم, آئی کوڈ ٹیک یو مائی سیلف, آپ کمپیئر کریں اس کو NHS کے ساتھ, یہ ان کے مقابلہ کر سکتے ہیں. ہم نے چاہے وہ ٹراما سینٹر ہو, چاہے وہ تعلیم کے ادارے ہو, ہم نے کام کیا ہے. آپ کچرا کا نظام دیکھ لیں, آج بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کراچی کا, لیکن آپ ہمارا ٹرم کا کمپیریسن کریں. پہلے ہم کہتے تھے کہ یہ لوگ رکاوٹیں ڈال رہے ہیں, جو ان کا اپنا کام ہے وہ نہیں کر رہے ہیں, ہمیں پلیز سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو ڈسٹرکٹ وائز آؤٹ سورس کرنے دے. انہوں نے ہمیں نہیں کرنے دیا, اس لیے ان کا مزہ تھا. آپ نہیں تو میڈیا والے ٹی وی پہ کہتے تھے کہ یہ تو کراچی نہیں کچراچی ہے. اور ہم نے کم عرصے میں زمین آسمان کا فرق ہے جب سے سالڈ ویسٹ کام کرنا شروع کر دیا ہے. بہت کام کرنا باقی ہے. کراچی از اے میسو سٹی, مگر آپ واقعی کمپیئر کر سکتے ہیں کہ ہم نے جو انٹرونشنس کیے ہیں وہ کیا ہے. آپ میرے پبلک اسپیسیز کو دیکھیں, میں نے جو پیپلز اسکوائر کے نام پہ پبلک اسپیسیز انٹروڈیوس کیا ہے کراچی میں, اس لیے یہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا ہمارے نوجوان کے لیے کہ they don't have anything to do, they don't have anywhere to go, which is why اس منشور میں تو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ آگے جا کے یوتھ مرکز بھی بنائیں گے, مگر پبلک اسپیسیز کو ہم نے انٹروڈیوس کیا ہے. پہلے کراچی کے عوام کو بیچ جانا پڑتا تھا تو ان کا بیک ٹوٹ جاتا تھا, ہم نے وہاں کا انفراسٹرکچر صحیح کیا ہے. اور this is literally only in the limited amount of time where I've had a KMC that's not opposing me. ہم نے مرتضیٰ وہاب کے اس دوران میں already we have doubled KMC's revenue.
उन्हीं लोगों जो हमारे खिलाफ लड़ रहे वो कहते थे पैसे नहीं थे. जो वहाब कर रहा है वो KMC के फंडिंग से कर रहा है. इंशाल्लाह ताला हम सूबाई हुकूमत बना के उनके साथ मिलकर कराची में काम करेंगे. कराची इज़ द ओनली मेगा सिटी इन पाकिस्तान. इट डिजर्व्स द फेडरल सपोर्ट दैट इट हैज़ नेवर गॉट. शहबाज शरीफ आया, मैंने तो कहा आपका शहबाज स्पीड है, आप इसी शहबाज स्पीड के साथ मेरे कराची का केफो का मसला हल करें. Anyway, शहबाज स्पीड नहीं रहा, अब तो शहबाज स्लो है, वो तो हुआ नहीं. बट द पॉइंट इज़ ना शहबाज शरीफ की हुकूमत में, ना खान साहब की हुकूमत में, ना मियाँ साहब की हुकूमत में कराची को वो फोकस, वो सपोर्ट दिया गया जो उसका हक है. मुस्तफ़ा कमाल ख़ुद कहता है, उसका क्लिप मौजूद है कि कराची को सबसे ज़्यादा रिसोर्स सदर सरदारी ने दिए. इंशाल्लाह ताला हम वफाकी हुकूमत बनाएंगे. मैं अगर ख़ुद वज़ीर आज़म बनता हूँ तो आई नो कराची लाइक आई नो द बैक ऑफ माई हैंड. इंशाल्लाह ताला हम इस शहर को आई कांट प्रॉमिस कि हम दूध और शहद के नहरें बहा देंगे, लेकिन आई विल गिव इट माई ऑल. एंड इंशाल्लाह ताला हम ऐसे तब्दीलियाँ लेकर आएंगे जहाँ मैं फ़ख्र से कह सकूँ कि यार ये मेरा कराची है. Since मुस्तफ़ा कमाल की एक दो बातें हो गई हैं, he is welcome to come on and we'll discuss this in more detail with him and Murtaza Wahab also. लोगों के हज़ार सवाल हैं, but I just want to ask one since we're running out of time because I thought it was a very poignant सवाल. Somebody said, as somebody also who's lost a parent, he lost a parent when he was 19. How do you cope with that? Oh, I don't think you ever. So coping is you get on with life. I mean, how else do you cope? I don't think that's something that you ever forget. It's a trauma or it's a pain that stays with you forever. How I have coped is I use that pain or that emotion as my drive to do what I do. And I believe that I am working towards fulfilling my mother's unfulfilled mission. So that is a way that you can turn something that is so difficult or so painful into your strongest asset, into your strength. And that's why sort of I'm driven it every day, why I'm sitting and doing this interview at 11 o'clock at night, is because that's what drives me. I must appreciate, I think it's the first time the head of a political party has come on an independent podcast and मैंने उनसे पूछा था कि मैं कौन सा सवाल नहीं पूछ सकते. उन्होंने बोला अगर बिलावल साहब को पता चल गया कि मैंने आपको बताया है कि क्या पूछ सकते हैं क्या नहीं पूछ सकते तो मेरी नौकरी चली जाएगी. एंड दिस इज़ क्वाइट रेयर फॉर अ political leader of your stature to come on a podcast, be open to criticism, be open to questions. So I must appreciate and respect that, even if I disagree with you on many things that you've said. Thank you. Thank you so much for your time and thank you for listening. Take care.